Now few preliminaries are required to complete the series. So our first question is, what is sequence? Now definition is sequence is a function whose domain is set of natural numbers and range may be any set. तो कहने का क्या मतलब है कि सीक्वेंस जो है एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड रेंज क्या हो सकती है, कोई भी सेट हो सकता है. जैसे फंक्शन किस टाइप का बनेगा, f इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम n टू r. फॉर एग्जाम्पल, if I take f of n equal to n, or we can write this as, or an equal to n. An is a denotation to denote nth term, or more simple are used for example un, bn, etc. Now we come to the example f of n equal to n. On the set domain is set of natural number. That means we have to take, and set of natural number is what, n starting from 1 2 3 4 up to so on. That means if I take f of 1, this is going to be 1, f of 2, this is going to be 2, f of 3, this is going to be 3. These are the range. So in this case our range is also set of natural number. That means here in this example domain is same, that means set of natural number, and range is also same, set of natural number. If I take another example, second example, say f of n, this is equal to 2n plus 1. Now again our domain is, by the definition, if this is sequence, then our domain is from set of natural number, and range could be anything. For example, f of 1, if substitute n equal to 1 here, then we get 3. F of 2, that means we get 1 by 5, sorry, and f of 3, this is equal to 1 by 7, and up to so on. Okay? In this case our range set is 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, up to so on. Our range is 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, up to so on. That means here is range is not a set of natural number. Here range is a set of rational numbers. Okay? That means from these two examples, first one is this one and second one is this one, we can conclude that sequence is a function whose domain is set of natural number and range may be any set. Next. Bounded sequence. Sequence is denoted by this symbol, or like this. We say bounded sequence means a sequence, I am denoting sequence by an. General term, a sequence an is said to be bounded if there exists a real number, say
m, this must be greater than 0, such that mod of an is less than equal to m for all n belongs to n. That means, now to understand this thing, we take example. Suppose I have chosen an, this sequence, this is equal to minus 1 raised to power n. Here our sequence is an equal to minus 1 raised to power n. An means nth term. If I want to look for the first term, then I have to substitute n equal to 1. On substituting n equal to 1, we get a1 equal to minus 1 power 1, that means minus 1. a2, this is equal to minus 1 power 2, which is equal to 1. a3 is minus 1. a4 positive. That means our whole sequence is in 1 and minus 1 form. That means we get an sequence is just like this: minus 1, 1, 1, minus 1, plus 1, sorry, 1, 1, default sign should be taken as positive, so up to so on. Here, that means mod of an, if I take mod of an, that means minus 1 raised to power n. In mod, this turn out to be 1 positive. That means an is less than equal to 1. Less than why less than a? Because minus 1 is less than 1. So we are able to find a value in the sequence अब देखो कर क्या सकते हैं, इसमें हमको एक वैल्यू मिल गई जिससे सीक्वेंस की सभी वैल्यूज क्या छोटी हैं. ठीक है, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी वाले रूल अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, आई विल गेट 1 लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू 1. तो कहने का क्या मतलब है, हमारा सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, एक वैल्यू देखो यहां से क्या आ जाएगा, फ्रॉम दिस वी गेट an इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड फ्रॉम दिस an इक्वल टू -1. दैट मीन अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है जिसमें से हम दो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक जिसमें क्या, एक वो वैल्यू जिसमें सीक्वेंस की सभी वैल्यू बड़ी होंगी और एक वो वैल्यू जिससे सीक्वेंस की सभी वैल्यू छोटी होंगी, तो होगा क्या होगा, वो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा. तो अब इसी एग्जांपल देख, एग्जांपल तो यही है कि an इक्वल टू -1 रेज टू पावर n. ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारा है. ठीक है, अब कहीं अब क्या है, रेंज की भी बात कर लें. द सेट ऑफ distinct elements of a sequence is called a range of a sequence. In this example, an equal to -1 raised to power n, an is -1 raised to power n. In this, देखो, in this, if I expand, I will get only -1, 1, 1, -1, 1, -1. So here number of distinct elements are only 2. That means 1 and -1. That means here our range set is -1 and 1. Now we come to the point convergent sequence. A sequence an is said to be convergent if limit n tends to infinity an
इक्वल टू एल फाइनाइट नंबर। मतलब कहने का क्या मतलब, हम सीक्वेंस लें, अगर एन को हम इन्फिनिटी टर्न कर दें तो अगर उसकी वैल्यू क्या है वो ये लिमिट एडजस्ट करे, कोई वैल्यू आ जाए, मतलब सम वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, जो वैल्यू हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुड बी एनीथिंग, लेकिन क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी, देन वी से द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एंड अगर कन्वर्जेंट नहीं है देन डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, इट कुड बी डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट का क्या मतलब है, अब डाइवर्जेंट के लिए क्या हो सकता है कि कोई सीक्वेंस है ए एन, तो अगर हम क्या करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, अगर ये इन्फिनिटी आ जाए या फिर क्या आ जाए माइनस इन्फिनिटी आ जाए, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस।